गाइस, जब भी कोई पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक्सपांड करने की सोचता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करे या फिर उस फर्म को किसी कंपनी को बेच दे या फिर उसको कन्वर्ट कर दे कंपनी में। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ लिमिटेड कंपनी के कुछ MCQs के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय परमार एंड यू आर वाचिंग एन एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। One by fifth of 10,000 equity shares of rupees 10 each received by partnership firm against purchase consideration has been sold in the market at rupees 12 per share. The profit to be credited to realization account would amount to, यहाँ पे वो क्लियरली पूछा है कि जो शेयर बेच रहे हैं 10 रुपए के शेयर्स 12 रुपए बेच रहे हैं, उसमें से आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसमें से कितना प्रॉफिट आपको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट प्रॉफिट. Cost price per share is rupees 10 less selling price per share is rupees 12. So you can clearly see profit will be rupees 2 per share. And the total number of shares has been sold 10,000 into 1 by 5. 10,000 shares receive हुए, उसमें से 1 by 5 shares sold हो रहे. So total number of shares sold will be 2,000 shares. So we can find the easily that 2,000 shares multiply by rupees 2 profit per share, it will be 4,000 profit. So total amount of profit should be credited to realization account will be 4,000. Moving to next question. The purchase consideration in bracket determined on conversion of partnership firm into a company is rupees 4 lakh. Purchase consideration diye, that is 4 lakh. The purchasing company settles it by allotting 32,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 11 per share, 4,000 15% debenture of rupees 10 each at 15% discount, and the balance in cash. Cash paid in regards would be कि कैश कितना होगा. आपको 4 लाख आपको परचेस कंसिडरेशन दिए, उसके बदले वो क्या क्या 3 चीजें देनी है. एक इक्विटी शेयर. सो फर्स्ट 32,000 इक्विटी शेयर्स. इक्विटी है आपका 32,000. एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10 रुपए का, लेकिन आपको प्रीमियम के साथ मिल रहा है. सो इट विल बी 11 rupees per share. So total will be 3,52,000 plus you are getting debentures. You are getting 4,000 debentures of rupees 10 each, but at 15% discount. So minus 15%. So you will get total 34,000. 34,000. So इन दोनों का टोटल करते हैं. That will be 3,86,000 and less your total purchase price, that is 4 lakhs. So rest amount will be in cash and that will be 14,000. So here the correct answer is 14,000. Moving to next question. A company has borne and paid firm's dissolution expense of rupees 2,000. कंपनी ने फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी इफ नेट एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑफ रुपीज 3,23,000. फाइंड आउट द परचेस कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस. क्वाइट सिंपल. 3,23,000 नेट एसेट है, यानी कि ये आपकी परचेस प्राइस है, प्लस एडिशनली कंपनी 2,000 रुपए डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर रही है. सो एक्चुअल परचेस कंसिडरेशन विल बी 3,23,000 प्लस 2,000 ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस. सो टोटल कंसिडरेशन कंपनी कितना पे कर रही है एग्जैक्टली? दैट विल बी 3,25,000. सो द करेक्ट आंसर इज 3,25,000. मूविंग टू नेक्स्ट वन. Firm was converted into a limited company. The company allowed rupees 1,80,000 as goodwill. देखिए कंपनी ने गुडविल अलाउ की है. सो इट इज अ न्यू गुडविल और ये हमारी असेट की तरह ट्रीट होगी. The company has taken over
asset for rupees 23,22,000 and liabilities for rupees 5,02,000. The company gives 1,44,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 26% and remaining amount in cash towards purchase price. Find out the amount of cash price. आपको सबसे पहले यहाँ पे परचेस प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, उसमें से इक्विटी शेयर माइनस करके आपको जो भी डिफरेंस अमाउंट मिलेगी दैट विल बी योर कैश प्राइस. तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं परचेस प्राइस यानी कि आपकी नेट असेट. सो फॉर्मूला फॉर नेट असेट is equal to total asset minus total liabilities. So your total asset will be, as I told you, company goodwill भी पे कर रही है. So 1,80,000 will be goodwill plus actual value of asset that is 23,22,000. इसमें से हम माइनस करेंगे हमारी liability that is 5,02,000. So the total purchase price, or you can say net asset, will be 20 lakhs. Now इसमें से आपको दो चीजें मिल रही है. फर्स्ट यू आर गेटिंग इक्विटीज. योर अमाउंट ऑफ इक्विटी इज 1,44,000 इक्विटी शेयर्स. Of rupees 10 each plus 26% premium. So your total equity share will be 18,14,400. And remaining amount will be in cash. So this is our question mark. यही हमें फाइंड करना है. सब ये कैसे फाइंड करेंगे? 20 lakhs जो कि हमारी टोटल परचेस प्राइस, उसमें से इक्विटी की वैल्यू माइनस कर देंगे 18,14,400. सो यू विल गेट द अमाउंट 1,85,600 एज एन अमाउंट ऑफ कैश. सो योर करेक्ट आंसर इज 1,85,600. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Firm of A and B has received 50,000 equity shares of rupees 10 each at 20% premium from purchasing company. Out of these shares, 2/5 shares were sold out at 10% discount and partner had distribute remaining shares. Find out the amount of shares remaining for distribution. आपको जितना शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा है आफ्टर सेलिंग, वो उसकी अमाउंट फाइंड करनी है. सो टोटल शेयर्स आपके थे 50,000, राइट. उसमें से 2/5 सोल्ड हो गए, बचे कितने? 3/5. चलिए कैलकुलेट करते हैं. सो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो हमारे 3/5 बचे हुए, 2/5 तो सोल्ड हो गए. सो 3/5 इज अवर पेंडिंग. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 30,000 which is remaining. This is the quantity of shares. Now talking about the amount of shares, कितने, उसकी प्राइस कितनी है? That was issues at 10 per share with 20% premium. So 10 plus 20. So price of share will be rupees 10 plus 20% premium. So price per share will be rupees 12. So 30,000 number of shares into rupees 12. So it will be 3,60,000. So this is the amount of remaining shares. Correct answer is 3,60,000. Moving to next question. In the books of firm, the asset and liabilities are as follows. Machinery 35,000, stock 10,000, creditors rupees 15,000, cash 10,000, furniture 30,000, debtors 12,000, bills payable 10,000. Calculate purchase price. Now in this question आपको कुछ assets कुछ liabilities दी हुई है, और जब भी ऐसा question हो so it is a question of net asset method. चलिए
सो आपको टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करनी होती है. चलिए करते. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द टोटल असेट लेस टोटल लायबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल असेट वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ इज मशीनरी 35,000. दिस इज योर असेट. नेक्स्ट स्टॉक, अगेन इट इज योर असेट 10,000. Then creditor are your liabilities, that is 15,000. Then cash is your asset 10,000. Then furniture, again your asset 30,000. Then debtors, again your asset 12,000. And bills payable is your liability 10,000. So let's make a total of both. Total liability will be 25,000 and total asset will be 97,000. So here will be the answer. Net asset, or you can say purchase price, will be 97,000 less 25,000. So you will get the amount 72,000. So this is your answer, 72,000. Moving to the next question. Net asset of firm is 60,000. The firm sells its business to Sham Limited for purchase consideration. Sham Limited pays 4,000 equity shares of rupees 10 each, 8%, 300 debentures of rupees 100 each, and cash rupees 5,000. Calculate goodwill. Now you have to calculate the goodwill. अब goodwill कैसे calculate होती है कि आपको net asset के सामने क्या क्या चीजें दी हुई है, अब उन दोनों को हमें कंपेयर करना होता है. सो इफ यू सी योर नेट एसेट इज 60,000, उसके सामने आपको कंसिडरेशन में क्या मिला है? फर्स्ट यू आर गेटिंग इक्विटी. सो इक्विटी वैल्यू इज 4,000 इंटू रुपीज 10, सो इट विल बी 40,000. प्लस you got debentures, that is 300 into 100, so it will be 30,000. And rest you are getting cash, so that is 5,000. So total you are getting worth of rupees 75,000 in consideration. Now your net asset is 60,000 only, but instead of 60,000 you are getting 75,000. So the excess of the amount is your goodwill. So goodwill will be purchase price less purchase consideration, that is 60,000 minus 75,000. So 15,000 is an excess amount which is paid by the firm to your paid by the company to your firm, that is 15,000. So the correct answer is 15,000 is an goodwill. This is the excess amount. Moving to next question. A partnership firm converted into company against purchase price of rupees 30 lakh. Company has to give 13,000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium, 70,000 in cash, and the balance amount in preference share and debenture in the ratio of 2:1. Calculate the amount of preference share. The value of firm is 30 lakh. So this is the 30 lakh, and against this 30 lakh, what the firm is getting? They're getting four things. First equity share, then cash, and then rest of the amount in debenture and in preference share. आपको यहाँ पे बोला है preference share की वैल्यू फाइंड करने के लिए. चलिए सबसे पहले रेस्ट ऑफ द अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी. सो लेस, यहां से हम पहले माइनस करेंगे इक्विटी. तो कितनी इक्विटी माइनस होगी? 13,000 इंटू रुपीज 10, और विथ प्रीमियम मिल रहा है, सो प्लस 10% मोर, सो इट विल बी 1,43,000. 1,43,000. Then less cash of rupees 70,000. So your remaining balance will be 27 lakh. 27 lakh 87,000
Now this 27,80,000 will be distributed in the two part. First will be your preference and next will be your debenture. So part of preference is, the ratio is given 2:1. So 2 stands for preference, 1 stands for debenture. So 27,87,000 into 2:1. So 2/3. So you will get the amount of preference share 18,58,000. So this is your answer, 18,58,000. लेकिन डिबेंचर में क्या आएगा? सेम वे 27,87,000 into 1/3. So the amount for debenture will be 9,29,000. Moving to next question. When purchase consideration is fixed by totaling of company's equity share, preference share, debentures, cash, etc. Which method is used for this kind of purchase consideration? जब भी आपको क्लियरली बोल दिया कि आपको इक्विटी इतना मिल रहा है, शेयर इतना मिल रहा है, कैश इतना मिल रहा है, डिबेंचर इतना मिल रहा है, सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपको क्लियरली बोल दे इतना ही आपको मिल रहा है. सो दैट टाइम वी आर यूजिंग, वी कॉल्ड एज कंसिडरेशन मेथड. राइट, नेट असेट में आपको कोई ना कोई एक चीज मिसिंग दी होगी, या तो कैश या डिबेंचर या शेयर्स, व्हाटएवर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन अ क्वेश्चन information is given that dissolution expense or conversion expense will be borne and paid by the business purchaser, then what entry should be passed in the books of partnership firm? जब भी कंपनी और परचेजर कंपनी आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करती है तो फर्म की बुक को उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है. सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which entries are to be passed by the partnership firm to close the account of asset and liabilities at the time of conversion of partnership firm into company? So here are the four options. The entry should be passed. Option number C, assets are debited to realization account and liabilities are credited to रियलाइजेशन अकाउंट. हमें सारी असेट एंड सारी लायबिलिटीज को डिसॉल्व करना होता है, या तो न्यू कंपनी ले जाएगी या पार्टनर्स खुद उसे सेल करेंगे या पार्टनर्स खुद ले जाएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 4/10 of equity share of ₹10 each received by a partnership firm against purchase consideration has been sold in the market at ₹12 per share. The profit to be credited to realization account would amount to. We have just seen this kind of question. So again यहाँ पे भी वही चीज है. Let's see. First of all we have to find out the profit per share. Right, चलिए. So here price of share is ₹10 plus selling price will be ₹12. It is ₹2 per share. Now कितने number of shares sold हो रहे? So 10,000 total number of shares है आपके, उसमें से 4/10 यानी कि 4,000 सोल्ड हो रहे. सो प्रॉफिट कितना होगा? 4,000 शेयर सोल्ड हो रहे और एक शेयर का प्रॉफिट है ₹2. टोटल प्रॉफिट विल बी 8,000. सो 8,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एज अ प्रॉफिट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ पार्टनर इज ग्रांटेड कमीशन फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड एग्रीज टू बियर dissolution expense, realization expense paid by the firm is debited to. जब पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने की बात करे या उसको कमीशन ग्रांट किया जाए, सो दैट टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. मूविंग टू नेक्स्ट. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी शोज. असेट ज्यादा है, असेट की वैल्यूज बढ़ रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, सो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है. सो इट शोज यू योर रियलाइजेशन प्रॉफिट. और अगर उल्टी सिचुएशन होती यानी कि असेट घट रही हो और लायबिलिटीज बढ़ रही हो, सो दैट टाइम रियलाइजेशन लॉस आपका हो रहा है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रियलाइजेशन अकाउंट इज व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट? सो
realization account is nominal account. Next question is, by fixing purchase consideration, which of the following is deduct from the asset when using net asset method? कि जब आप नेट एसेट मेथड यूज कर रहे हो तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी चीज है आप टोटल एसेट में से माइनस करते हो. सो हमारा फॉर्मूला है नेट एसेट का, दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल liabilities. So the correct answer is liabilities and dues, option A. Moving to next question. Out of which journal entry is passed when partnership firm receive the consideration of purchase price? कि जब आपको purchase price का consideration की चीजें मिल जाती है तो कौन सी जर्नल एंट्री पास ऑन की जाती है? बेसिकली दो एंट्रीज अलग अलग होती है. एक होती है परचेज प्राइस ड्यू की, एक होती है परचेज कंसीडरेशन रिसीव की. यहां पे आपको रिसीव के बारे में पूछा है. सो रिसीव के लिए एंट्री होती है ऑल द थिंग्स विच यू आर रिसीविंग, आइदर इट इज इक्विटी शेयर, आइदर इट इज प्रेफरेंस, आइदर इट इज कैश, आइदर इट इज डिबेंचर. दिस ऑल विल बी डेबिटेड टू परचेजिंग कंपनीज अकाउंट. राइट, सो परचेजिंग कंपनी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और जो भी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है दैट ऑल विल बी डेबिटेड. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सच कंसिडरेशन, ऑप्शन है सच कंसिडरेशंस अकाउंट बाय क्रेडिटिंग न्यू कंपनीज अकाउंट. अब ड्यू की भी बात कर लेते हैं साथ में. जब आपकी परचेज कंसिडरेशन ड्यू होता है दैट टाइम परचेजिंग कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो यहां पे हमने दोनों ही एंट्रीज डिस्कस कर ली. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स और डिबेंचर रिसीव एज परचेज कंसिडरेशन अमंग द पार्टनर्स. हाउ इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड? जब आपको कोई भी इंडिकेशन ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, तब you have to distribute in final capital ratio. लेकिन अगर फाइनल कैपिटल रेशियो भी ना दिया हुआ हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वल रेशियो में.